अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। यूथ फोरम का एक ताज़ा शुमारा लेकर मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरवाफियत होंगे, सेहतो सलामत होंगे, और हमें चाहिए अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहे कि वो हमें अपनी हिफाजत व ताक़ में रखे। नाज़रीन, दूरदर्शन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो आप तक नई नई मौज़ूआत को पेश करे। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही अहम और ज़रूरी है। जी हाँ, आज का जो हमारा मौजू है वो है जिद्दत पसंदी और तामीर व तरक्की, यानी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। नाज़रीन, दुनिया के जो भी तरक्की पसंद ममालिक हैं उन्होंने हमेशा अपने मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए ज़मीनी सतह पे काम किए हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो या जिनकी माशी हालत कमज़ोर हो, उनको हमेशा आगे तरक्की के रुझान पे लिया है। तो नाज़रीन, इस मौजू पे हमने आज भी बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है ख़ास मेहमान को और कुछ चंद साथियों को। चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो है डॉक्टर शेख फयाज़ अहमद, जो कि इनोवेशन रिसर्चर है चाइना यूनिवर्सिटी ज़ीजान के। खैर मकदम है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर। तो आज के जो हमारा साथ देंगे वो है हिलाल अहमद, जो कि एजुकेशन से वाबस्ता है। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमा हैं शमीमा, जो कि इकनॉमिक्स की तालिब इल्म है। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमा है फ़िज़ा, जो कि BSc एनेस्थीसियन है। आप सबका भी खैर मकदम। तो सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। जी वेल, मैंने JNU दिल्ली से MPhil PhD इनोवेशन स्टडीज़ में किया है। उसके बाद currently I work in China's Zhejiang University as a innovation researcher. I'm trying to compare India and China का जो innovation system है उसको लेके. And at the same time I have started a course at National Institute of Technology NIT Srinagar, and I'm a visiting faculty there. सर, आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहेंगे कि इनोवेशन क्या है और ये डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है? Well, innovation, there's a huge discourse about innovation or development, but I will try to summarize it very quickly. Innovation basically, anything new which creates value becomes innovation. अब ये नया चीज़ क्या होगा? It could be a new product, it could be a new process, it could be a new market. For example, परसों तक if you had to buy something, you will go to the regular market, and then from shop to shop you will find your products. But now you have Amazon, you have other platforms, so that's a new market. That's the new thing, new product, new process. But the important thing is, when we talk about innovation, is when this new thing creates value. अब ये value क्या है? Most of the innovation scholars, they have talked about economic value, that it should go to the market and create economic value. But it can create social value, it can create health value, it can create well-being value, psychological value. So anything new which creates value becomes innovation. थैंक यू सर। आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन आप उनसे पहले कि हम इनसे भी बात कर लेंगे। हिलाल, आपको हम पूछना चाहेंगे कि इनोवेशन और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है उनका? जी, एक्चुअली इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इज आर एक्चुअली कोरिलेटेड टर्म्स। ओके, जहाँ पे आपको लगेगा कि इनोवेशन है वहीं पे आपको लगेगा डेवलपमेंट भी है। सो फॉर एज द सेम प्रोसेस इज कंसर्न, अर्ली फ्लाइंग बर्ड कैचेस अ प्रे। जी बिल्कुल। जिस तरह सुबह से ही कोई जानवर निकलता है वो कोई प्रे कैच करता है, इसी तरह जहाँ से हम इनोवेशन एंड डेवलपमेंट को देखेंगे, जहाँ से आपको इनोवेशन नज़र आएगा वहीं से आपको डेवलपमेंट भी नज़र आएगा। सेम इज़ द केस, आई फील इट इज़ कोरिलेटेड टर्म्स। जी बिल्कुल। जी मैम। तो शमीमा जी, आपसे हम बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि इसकी नीड क्या है, इनोवेशन की नीड क्या है? देखिए, हमको इनोवेशन हर कदम पर हमें ज़रूरी है। बिल्कुल। बिकॉज व्हेन द प्रोडक्ट इज़ मेड, द प्रोडक्ट नीड्स टू इट्स डिमांड इन द मार्केट। तो उस डिमांड के लिए, कंटिन्यूस डिमांड के लिए, उसको कंटिन्यूसली चेंज लाना है, खुद में उसको इम्प्रूव करना है, हमें बदलना है उसको, हमें उसको नेक्स्ट स्टेज पे लाना है ताकि हम उसको और इम्प्रूव करें ताकि हम उसको लोगों के टेस्ट्स और प्रेफरेंस के हिसाब से बनाएं। ठीक है, और इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उसका जो कास्ट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कास्ट उसका जो आता है वो भी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, हम एग्जांपल दे इसको समझ सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए, जब कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखिए उसमें कितना कॉस्ट था, है ना? वो पूरा रूम ऑक्यूपाई होता था, उससे हीट होता था, उससे राइज, ठीक, और उसकी कॉस्ट बहुत आते थे। मगर जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गए
تو اس کی کاسٹ کم ریڈیوس ہو ہوتی گئی جا رہی ہے. اور اس کو جو لمیٹیشن ہو وہ کم ہو گئی اور جو اس کے فیوچرس ہے وہ رائز ہونے لگے. اور تھرڈ جنریشن کی بات کریں تو اس کے اور زیادہ بینیفٹ فائدے آ گئے. یعنی جی کہ وہ ایک پروسیس تھا جسے چینج ہوتے گئے ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ اس میں بدلاؤ آ گئے. اور جو بدلاؤ مطلب انوویشن اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. تو اسی چیز کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سے راحت پہنچتی ہے لوگوں کو, اسی سے بینیفٹ پہنچتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے جی, بہت خوب. تو فضا آپ سے یقیناً جاننا چاہیں گے, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں آپ, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے انوویشن کتنا ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دن بدن ہماری روزمرہ کی زندگی میں کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ایز اف مطلب اسٹوڈنٹس جو ہے کوئی ابراڈ جاتا ہے, کوئی انڈیا میں ہی پڑھتا ہے, اس وجہ سے کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اگر انوویشن نہیں ہوتا تو ہم اپنی نیڈس کو فلفل نہیں کر پاتے, ہم اپنے گولز تک اچیو نہیں کر پاتے اور امپروو نہیں کر پاتے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں لیتی ہوں موبائل فون کی. اگر ہمیں کوئی ورڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے, ہم گوگل کر سکتے ہیں. ہم گوگل سرچ کرتے ہیں. ہم گوگل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کچھ سال پہلے جائے اور دیکھیں, ہمارے پاس موبائل فون ہوتا تھا, اس میں زیادہ فیچرز نہیں ہوتے تھے اور انٹرنیٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا. اب اگر ہم آج کے اسمارٹ فونز کی بات کریں, اس میں انٹرنیٹ بھی موجود ہے اور بہت سارے فیچرز بھی موجود ہیں, جس کی وجہ سے ہم ورلڈ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی, پر اس جیتی ہوئی لڑائی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پورن روپ سے ٹل نہ جائے. خطرہ ہے برقرار, اسی لیے پولیو کی خوراک پلانا ہے ہر بار. 2 بوند ہر بار, پولیو پر جیت رہے برقرار. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. کسی بھی انسان سے ورچولی مل سکتے ہیں, جس کو ہم ویڈیو کال کہتے ہیں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کووڈ-19 پینڈیمک میں بچے جو ہے گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ انوویشن کی وجہ. اگر انوویشن نہیں ہوتا, ترقی نہیں ہوتی, تو وہ ناممکن ہی ہو سکتا. اس لیے جو ہے وہ ہیوج امپورٹنس ہے انوویشن کی ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں. جی سر, آپ سے جاننا چاہیں گے, اگر ہمیں انوویٹر بننا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی پرٹیکولر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی, ان کے لیے یہ میسج ضروری ہونا چاہیے. ویری امپورٹنٹ کوشچن, اینڈ the first thing I want to compliment our participants. Yeah, sure. انہوں نے انوویشن کو لے کے there is a great discussion happening in Kashmir at the policy level, at this university level, and of course in these mediums people are talking about innovation, which is actually a welcome step. Now many people are confused کہ آپ innovator بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو یونیورسٹی جانا چاہیے, does education, do you require university education, or you require huge financial resources? If you look at the history of innovations, اگر آپ 18th century یا 17th century سے اگر آپ شروع کریں گے, if you look at the history how innovators have emerged, then of course if there are some breakthrough innovation. For example 1764 میں جیمس ہیگریوز نے جب spinning wheel invent kiya, and then we have James Watt, everybody knows about him. He improved steam engine. And then we have Isaac Singer, he revolutionized American economy using his technology, sieving machine, which we use even in Kashmir. And then in the last part of the 18th century, jab aviation ko leke kaam chal raha tha, then Professor Samuel Langley, he was a university professor at University of Petersburg. Aerodynamics ko leke wo bahut usne kaam kiya tha, and he was funded by government of America, thinking that he is a mathematician professor, he knows aerodynamics, he will be the first person probably to create and invent the first flying machine. But it were basically the cycle mechanics, those Wright brothers, they invented the first flying machine, and not the professor who was at University of Pittsburgh. So when we say that you require education, I don't think that education is actually required to be an education, to become an innovator. But it doesn't mean कि आप
education is of no importance. You can be an innovator without going to the university, but if you are going to the university, you can of course know the problem very well, and you can find these windows of opportunities in a nicer way. And the other thing is like, do you require resources? आपको financial resources चाहिए to create a successful model of innovation. क्योंकि बहुत सारे उनकी like सोच रहे होंगे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हमें देना होगा ताकि हमें एक गुड इनोवेटर बन सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे क्लियर कीजिए. That's very important. Resources are required. Capabilities are needed. And जो आपका एक pro innovation ecosystem है, that it's a lot, that helps a lot in creating innovation success stories. But if you say that you require resources, then of course you can create beautiful innovation models with low small resources at your hand. For example, I'll cite the case of Professor Muhammad Yunus. He was awarded Nobel Prize in 2006. In 1993 he created Grameen Bank. उसने ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत की थी with $27, and he approached some 42 families. He started giving microcredit loan, and now almost around 10 million people are the borrowers of Grameen Bank, and he is helping people around the world. So it was a beautiful model, required less resources. Same thing happened with Samsung. Samsung most of the people use Samsung mobile phones and its electrical equipments. Samsung was actually selling dried fish. اور سونی کا ایک we have heard about Sony, a successful innovation model. They were into blanket making, electric blankets وہ initially بنا رہے تھے. So then if you want to create innovation models, I don't think that you compulsorily need an university degree, a lot of resources. You can create windows of opportunities. You can create new models which will require less resources. That's why we want innovation. Innovation is creating solutions out of scarcity, offering solution when you are facing difficulty, inventing new things when you require them, or inventing a need when there is no need. So that's why we talk about innovation, and that's why future belongs to innovation. جی بالکل. تو ہلال آپ سے جاننا چاہیں گے, جیسے سر نے بخوبی ڈیفائن کر لیا کہ انوویشن کیا ہے, تو آپ کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے کہ انوویشن کیا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایکچولی جو سر نے بالکل مطلب واضح الفاظ میں کلیئر کیا ہے کہ انوویشن کے لیے ایک ایجوکیشنسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اگر اس کے پاس ایجوکیشن ہے تو وہ اس انوویٹر آئیڈیاز کو تھوڑا ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا کئی بار جب ہم باہر جا رہے ہیں یا اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں کہ کوئی بچہ بالکل لاسٹ میں مم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کو کلیئرلی اس کو جاتے ہیں کہ اس کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اس کے پاس اتنی آئیڈیاز ہوتی ہے, اتنی ویلیوز ہوتی ہے کہ جب ہم ان کو پالش کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, از ون آف دا بیسٹ بوائے. ٹھیک ہے, اسی طرح جس فیلڈ میں چاہے مورل ویلیو ہو, چاہے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہو, جس فیلڈ میں ہم جائیں گے ہمیں یہ ریسرچ کرنا ہے کہ یہ انوویٹیو آئیڈیاز آتے کہاں سے. میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتی ہوں انہیں کے پوائنٹ کو کہ انہوں نے انوویشن کی بات کی کہ کیا ہونا چاہیے اس انوویشن کے لیے. دیکھیے, اکارڈنگ ٹو می مجھے لگتا ہے کہ انوویشن کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں ایک گریٹ امیجنیشن ہونا چاہیے. امیجنیشن جس کی اچھی ہو وہ ایک اچھا انوویٹر بھی بن سکتا ہے. ایک آئیڈیا کی ضرورت ہونی چاہیے, ایک گریٹ تھاٹ کی ضرورت ہونی چاہیے. یہ کیوں بول رہی ہوں, دیکھیے ہمارے بہت ساری سائنٹسٹس انہوں نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کو, جن میں سے ایک نیکولا ٹیسلا بھی تھا. تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ اسٹرانگ امیجنیشن تھی. انہوں نے ایک دفعہ پارک میں مطلب وہ واک کر رہے تھے اور ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ایک مشین بناؤں گا. تو انہوں نے امیجن کیا, کھڑے امیجن کیا کہ وہ مشین کیسی ہوگی, اس کے پارٹس کیسے ہوں گے, اچھا یہ رن کیسے کرے گا, اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ امیجنیشن تھاٹ آ گیا اور امیجنیشن کریٹ کی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر ریئلٹی میں وہ مشین بنائی. تو یعنی کہ انہوں نے کوشش کی. جی, ان کے پاس امیجنیشن کی بات کر کے امیجنیشن بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آئیڈیا کی بھی بہت ضروری ہے. جیسے آئیڈیا انہوں نے وہ کلاس میں پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, پروفیسر پڑھا رہا تھا ڈی سی کرنٹس, اوکے, ڈائریکٹ کرنٹس کے بارے میں. تو انہوں نے پروفیسر کو ایک آئیڈیا وہیں پڑھ دیا کہ
हम इस डीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं एसी में, ताकि हम करंट को होम टू होम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। मगर उस प्रोफेसर ने एट द टाइम उन्होंने कहा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मगर वो नहीं रुके, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, काम किया उस पर, तो उन्होंने उसको ट्रू बनाया। आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर घर में है। वो क्यों है? वो उसी एसी की वजह से था, उसकी एक आइडिया की वजह से था। ठीक है, यानी कि आइडिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। मैं एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है कि आइडियाज़ वैल्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन जो हम लोग रिसर्च करते हैं, जब से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है हमें, अगर हम किसी जगह भी जा सकते हैं ना जहाँ पर हम लोग देखते हैं आम तौर पे हम जो इनोवेटिव आइडियाज़ हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। एट द एंड ऑफ टॉपिक, एट द एंड ऑफ द डे हम पाते हैं ना ये शायद ये आइडिया उसका अच्छा है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा वैल्यूज़ होती है, जिसके पास जो सोशल वैल्यूज़ सोशल नॉर्म्स होते हैं, हम उसी को फर्स्ट लाइन में खड़ा करते हैं, शायद उसी के पास ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, या वही ज़्यादा इनोवेटर्स है। एक्चुअली ये होता नहीं है मैडम, ठीक है। इसलिए हम इनोवेशन के लिए हमें डीपली स्टडी करनी चाहिए। ये शायद इसके पास इतनी तालीम नहीं है, इसके पास इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी इनोवेटिव आइडियाज़ तो है। तालीम ज़रूरी है। जैसे कि सर ने वाजे करके हमें बता भी दिया, तालीम ज़रूरी नहीं है, बट आइडियाज़ अगर हो तो उनको हम पॉलिश कर सकते हैं। जैसे कि उनको हम पॉलिश कर सकते हैं, हम उसको सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं। तो सर हमारी जो अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जहाँ पे इनोवेशंस की लेसन्स पढ़ाए जा सकते हैं? वेल यू नो मैंने ये इनोवेशन कश्मीर में जितने भी हमारे भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। innovators थे, we started profiling them in 2006. 2006 से we started profiling them in collaboration with National Innovation Foundation, with Department of Science and Technology, Government of India का एक body है. And then you know all the articles which we published, almost 200 articles, it culminated into a book form, Unsung Innovators of Kashmir. And 2006-07 में when we were working, we were meeting universities, policymakers, we were going to colleges, but तब उतना ज़्यादा we were not able to see the kind of enthusiasm of people towards innovation. We met different chief ministers and different policymakers, and we were building a case for innovation, why innovation is required in Kashmir. But abhi 2020 में, by the end of 2020, there are many universities, they have started setting up innovation centers. Incubation centers are coming up almost in all colleges. Higher education department, they have launched a very aggressive campaign to build innovation culture in colleges of Kashmir. And in 2016 I was approached by NIT Srinagar. They floated a course. I was hired as a consultant for that, and we floated a course on innovation and technology dynamics. This will be one of the first course launched anywhere in India, which will be exclusively focused towards innovation and technology dynamics. And now the response is enormous. Now state talks about innovations, policies are coming up. For example, 2018 में government of J&K, they have started startup policy. उसमें अगर आपके पास कोई innovative idea है, then they will give you 10 lakh rupees का एक grant आपको मिलेगा. You don't have to return that money back to EDI, but you can use that money and you can expand your business. The only thing needed there is you need to have an innovative proposal. It should not be the traditional business, conventional business. थोड़ा सा innovation होगा. And not only that 10 lakh grant which you will get from EDI, they are also offering you office space. You can use EDI as office space. You can go there and you can experiment your ideas. And importantly, Indian Institute of Management Ahmedabad, Indian Institute of Management Jammu, they have set up an off-campus in Srinagar. Professor Muqbil Burhan is heading that campus, and now they are also setting up incubation center in Kashmir, जहाँ पे business development, women entrepreneurship, local innovation clusters will be identified. Now it's a very I think the innovation debate has picked up both at the policy level, at university level. And of course, media is playing a very important role.
now media is, because media has played role in the past in helping create innovation culture, be it Korea in 1923, there was a newspaper called Donghae Daily. They started a series of articles to recognize local innovators. And in 1948, they had 2 patents, Korea. Abhi Korea, they file more than 6 lakh patents every year. And the whole revolution was started and encouraged and nurtured by local media in Korea. And same is true in Kashmir. Media houses, they have also started supporting innovation. So I see a bright future for innovators from Jammu and Kashmir. जी इंशाल्लाह। शमीमा जी आपसे जानना चाहेंगे, तो सर ने यहाँ पे बात छेड़ी मीडिया की, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं मीडिया की जो इनोवेशन की ओर हमें ला सकते हैं, तरक्की हासिल करा सकते हैं? मीडिया का भी रोल है इस इनोवेशन में। देखिए, अगर किसी बच्चे में सलाहियत है, वो इनोवेट करता है, वो चेंज लाता है, इन्वेंशन में चेंज लाता है, तो उनको वो सामने लाने की ज़रूरत है। देखिए, एक ज़रूरी बात है कि हमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि हम वो चीज़ उसको हम इंट्रोड्यूस करने की हमें सलाहियत होनी चाहिए। अगर मुझ में कैपेसिटी है, अगर मैंने कोई चीज़ इन्वेंट किया या इनोवेट किया है, ठीक है, तो मुझे वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं कम्युनिकेट कर सकूं, यानी कि लोगों को उसके बारे में बता सकूं, यानी कि और वो मीडिया भी मेरी हेल्प कर सकते हैं उस बारे में, यानी कि उनको सामने लाने के में वो मददगार साबित हो सकती है। जी फ़िज़ा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम इनोवेशन की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है जो कश्मीर के यंग्स हैं, आलमी शबाब है, क्या वो इनोवेशन की तरफ हैं? क्या उनका नज़रिया है इनोवेशन की तरह, या हमें उनको अभी गाइड करना चाहिए, उनको पॉलिश करना चाहिए? आप अपने नज़रिए से क्या बता सकते हैं हमें? बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं उनके पास तो मतलब वो जानते हैं कि इनोवेशन क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन अब जो जूनियर्स हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है, उनको ज़्यादा नहीं पता है, बिकॉज ये दिस इज़ कश्मीर, यहाँ पे जो हालात वगैरह है वो ज़्यादा ठीक अभी हम नहीं, उनको पॉलिश करना ज़रूरी है। वो हमें उनको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेटेड हमें उन तक पहुंचाना है कि इनोवेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। इस वजह से सर, इनोवेशन के रुझान को बढ़ाने के लिए आप हमें बताइए कि क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं? अगर आपको एक इनोवेशन कल्चर डेवलप करना है यहाँ पे, there are very important and successful models around the world. For example, I work in China. तो चाइना में 1930s में I repeated in every platform. In 1930 जो विड्रो विल्सन थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि चाइना में इतनी गुर्बत है, China won't be able to overcome the crisis which he was witnessing in China that time in 1930s. And then they suggested that China should be placed under international welfare system. Countries should pool money and give donations to China. But it was all because of innovations. From 1980s till 2020, they almost lifted around 1 billion people out of poverty. Now, how was China able to lift 1 billion people out of poverty? Or same is true with Korea. Or for example, you look at India. In 1947, when India got independence, many people they were not very hopeful that India would survive as an independent country. But then you could see a lot of innovations happening, and there is a lot of growth happening in India. And the reason being, they started focusing on innovations. Okay. China mein, they adopted certain policies where government, universities, and innovators, they work in tandem. For example, if you have some people who are engaged in shoemaking, who are doing a particular kind of trade, then state will come, they will build their capabilities, they will help them, they will give them more resources, and then private players will come in, they will build more infrastructure, they will work with them. So they have created a robust innovation system. जब आप एक robust innovation system बनाते हैं तो उसमें जो actor sector का involvement होता है वो बहुत, that's very important. Work in totality. Kashmir में what we are witnessing right now is probably the problem of disconnect within the innovation system. Your universities, they work independently, bureaucracy works independently, or innovators, they work independently, or entrepreneurs, they work independently, and banks, they work independently. अगर आपको एक culture
produce करना है, if you want to create an innovation culture, then we have to connect all these institutions, and you have to build a robust innovation system, and that will come only if these all independent institutions work together. सर यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी की बात हमने छेड़ी, तो यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए कि वो ज़्यादा रेलेवेंट हो जाए इन 21st सेंचुरी में? Well, you know, अभी भी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखें, there are couple of agencies, for example Times Higher Education की रैंकिंग है, QS की रैंकिंग है. They rank universities on different indicators, and every year they publish the list of top 100, top 200 and top 1000 universities around the world. बिल्कुल. Last year अगर आप देखेंगे तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक रैंकिंग में it's around 500th rank, और दूसरी में तो it's not profiled there. The problem being, you know, जो उनके indicators हैं, they look at the number of publications you have produced, the number of patents you have produced, the number of, you know, industry engagements the universities have created, and they're profiled on that basis. तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर आप पेटेंट्स का देखें तो you know the number of patents coming from Kashmir University NIT is very very less. I mean it's less than 5. But if you see in Japan or in Korea or maybe in other places, or for example if you look at some innovation hubs, clusters, for example Stanford, if you compare those universities, then it's in lakhs. Hundreds of thousands of patents are being granted. They don't apply for them, granted to these universities. And when a patent is granted to university, it means you know, original innovation has emerged from that university. The university has to focus on innovations. University has to be more relevant. You know, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, NIT के आसपास जो clusters हैं, for example आपके shawl weavers है, आपके यहाँ पे resource hubs हैं जहाँ पे walnut produce होता है, saffron produce होता है. So they have to actively engage with them, and then you know they have to co-create knowledge. This has happened in the Industrial Revolution. You know, there are two forms of knowledge: propositional knowledge and prescriptive knowledge. Propositional knowledge is outside university, and prescriptive knowledge is inside university. They have to blend these two forms of knowledges, and then they will be more relevant for the coming century. जी सर, वक्त की किल्लत की वजह से हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे इस मौजू पे, लेकिन कभी और मौका मिलेगा इस मौजू पे खूब बात करने का. लेकिन जाने से पहले हम एक मैसेज आप छोड़ के ही जाइए हमारे नाज़रीन के लिए. नाज़रीन आपको भी देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज प्लीज़. Well, अगर if we have to look for inclusive future, sustainable future, if we have to look for more equality based future, then I think all these three things can be fulfilled using innovation as an instrument. Thank you sir. हिलान, एक छोटा सा मैसेज. जी, एक्चुअली अगर हम इनोवेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें छोटे ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए. बिल्कुल. शमीमा जी. मैं इनोवेशन इज़ नेवर अ सिंगल इवेंट. इस पे कंटिन्यूसली हमें चेंज लानी है, ज़रूरत भी है, क्योंकि लोगों के हिसाब से, उनके टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से हमें इसको मॉडिफाई करना है. इनोवेशन विल मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. अगर हमारी लाइफ में इनोवेशन है, हम उसे ज़ाया ना करें. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, और आपका भी शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए. तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. मिलते हैं नए हफ्ते कुछ नए मेहमानों के साथ. तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.